Farmers, meanwhile, are on a war path over the recently passed 3 farm laws. Tensions are again running high at the Singhu border in North Delhi. This is the Delhi-Haryana border. Agitating farmers set tyres on fire on the national highway, expressing their anger. They are adamant that they should either be allowed to protest at Jantar Mantar or Ramlila Maidan. The Delhi police, however, has given them permission to protest only in Burari, but farmers are steadfast on their demand. There are some farmers who have reached Burari ground. The Delhi police sources have told us that majority of farmers are ready to protest at Burari, but that some union leaders are stopping them. Farmer union leaders are yet to finalize on their next course of action. Police have again blocked the Tikri border near Delhi-Bahadurgarh highway after allowing farmers to enter Delhi yesterday. Showdown is on the cards as farmers from Uttar Pradesh and Rajasthan are also marching towards Delhi. The Modi government has appealed to farmers to end their stir, inviting them for talks on December 3rd. The government has assured that minimum support price will stay as per the farmers' demand. 2022 का फार्मूला तो बता दो, सुन लेंगे, दिल्ली चलने लग रही है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से नीचे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव को डिक्लेयर करो। हम लड़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े-बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। The government always misinform, disinform people. We will deal with it. We are not worried about that. We are not divided. Wherever we are one. And now we are appealing to the society at large. Those who need to save and survive with food security must understand that these 3 acts will not only snatch away the land from the farmers and the Rojgar, the livelihood from the laborers, but it will also kill the food security of India. अभी अन्नदाता तो फिर बात तो करे ना अन्नदाता से, जब वोट लेनी होती है तब तो घर घर आते हैं जी, हम ऐसे करें, किसान हमारा जान। अभी देखो जी, किसान के साथ बात तो करें, हम तो शांति के साथ बात करना चाहते हैं, बैठे हैं शांति। हमारा 5 स्टार यही है, यहीं पर खाना खाएंगे, यहीं पर सो जाएंगे और क्या करेंगे। कब तक? जब तक नहीं बात बनेगी। कल से यहाँ पर आए, कोई हुल्लेबाजी नहीं, कोई बात नहीं। उधर से 8-10 बारी आंसू गैस छोड़ दिए, उसके बाद में फिर छोड़ दिए। दोस्तों, इतना तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में ऐसा हाल है जो यहाँ पर हाल। लकड़ वगैरह सब, सिलेंडर लकड़ वगैरह सब पंजाब से लेके आए हैं, फुल तैयारी करके है। पावे हमको 3 महीने बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, पावे 2022 तक बैठना पड़े। जिला तक जो काले कानून बनाया, खेती कानून बनाया, उसको सरकार रद्द नहीं करती, हमारा डेरा यही रहेगा। बिल अगर उन्होंने कैंसिल नहीं करने, हमारी इतनी उनसे रिक्वेस्ट है कि बिल को थोड़ा चेंज कर दें। अमेंडमेंट ला दे, बिल में थोड़े चेंजेस। हाँ, क्या चेंजेस है? चेंजेस ये है कि जो एमएसपी है हमारा फिक्स रेट है, कि वो उतना ही फिक्स रेट से हमें मिले। अगर किसी ने प्राइवेट ने खरीदना है उससे ऊपर खरीद ले, उससे नीचे नहीं। 3 कानून बने हैं, वो वापस लिए जाएं। 2 ऑर्डिनेंस अभी किए हुए हैं। अभी तो एक ऑर्डिनेंस टेबल पर ही है जो 2020 इलेक्ट्रिसिटी का है। दूसरा ऑर्डिनेंस जो पराली जगाने का 1 करोड़ जुर्माना और 3 साल या 5 साल की कैद किया, वो हम वापस कराना चाहते हैं। किसान इस जो कानून बना है, इससे अपने आप को ये सोचना भी हमारा लाभ नहीं है, हमारा नुकसान होगा। हमें कोर्ट बंद की गई है, हमें जो एडीएमसी मंडी है वो जारी रहनी चाहिए, हमारी एमएसपी जारी रहनी चाहिए। काले कानून पास किए हैं, जितना चिर वहाँ पर वो 3 बिलों को रद्द नहीं किए जाते, मोदी सरकार खत्म नहीं करती उनको, उतना चिर वहाँ पर ही हम रुकेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। जो फार्मर्स हैं वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और के साथ ये हम मुस्तैद हैं, और हमारा मेन पर्पस आज इनको फैसिलिटेट करना है और इनको कन्विंस करके हम जो दिल्ली सरकार ने जो स्थान निश्चित किया है इनके प्रदर्शन के लिए, वहाँ पर भेजने की चेष्टा कर रहे हैं। जो किसान की लीडरशिप है वो भी विचार विमर्श कर रही है और हमारे ऑफिसर्स भी इनसे लाइजन में हैं, और हमारी कोशिश यही है कि एमिकेबली रिजोल्व करके इनको निश्चित स्थान जो तय हुआ है इनके प्रदर्शन के लिए, जहाँ की परमिशन मिली है, वहाँ पर जाकर ये प्रदर्शन कर। कुछ भ्रम पैदा हुआ है, किसानों को, जो भोले भाले किसान हैं उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, और मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, केंद्र की सरकार निरंतर किसानों के संपर्क में है, और पिछले दिनों भी पीयूष गोयल जी और नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के साथ वार्ता की थी, और अभी 3 दिसंबर को भी वार्ता प्रस्तावित है।
लेकिन इसका पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया है और विपक्ष ये जानते हुए भी कि ये बिल किसानों के हितकारी हैं, उसके बावजूद इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहा है। It's absolutely shocking that the farmer who is the backbone of India's food security, who's the Annadata of India, is being hauled up, is being beaten up, is being shot at. And above all, leaders of the BJP, one minister, Mr. Anil Sharma of the Bharatiya Janata Party, is calling these farmers gundas. Are these gundas? I want to ask them, are these poor farmers who are protesting for their own rights, are these gundas? Will you call them hooligans? It is absolutely shameful what the Bharatiya Janata Party is doing. They must apologize, the Prime Minister must apologize, and they must listen to the demands of the farmer. Tanushree Pandey is joining us live from the Singhu border, at the Delhi-Haryana border, where we're seeing a showdown. Also with us is Aishwarya Paliwal, getting us the latest updates from Burari, which is a designated site where authorities are allowing farmers to protest. Tanushree, to you first. With farmers continuing to protest at Singhu border, is there any hope or any chance or some sort of middle ground, some agreement between authorities and these protesting farmers? That's right, Akshata. The farmers are still squatting at the Singhu border. Now, nothing really much has changed since morning for the farmers. The situation is absolutely under control and pretty much the same unlike yesterday. Akshata, I'll tell you, as you can see, the farmers are still sitting here at the Singhu border. Now, they have one simple demand. What their demand is that we want the government, the central government, to give us in writing that the minimum support price will be ensured for the farmers, so that no private party or no big, private player or any corporate can exploit the farmers. That is their demand. Now, the second part is the other side of the protest is, I'll ask my camera person to pan around and show you. There is a massive deployment of paramilitary forces and the police here at the Singhu border. Now, the police is saying that we are not going to use any brute force on the farmers, any sort of water cannon or tear gas shell until and unless they start to march forward. So that's the status quo which is being maintained here on the ground. The farmers are not marching forward. They are saying we are not going to retreat, move back, but we will not march forward unless there is a word from our top brass leaders. The police is saying that we are not going to use any brute force on the farmers unless they march forward. So that basically the ground situation is pretty much the same since the morning. Now all eyes are on the leaders of the Kisan organizations. They have to talk to the ministers and get to a middle ground so that the farmers here with their demands can also be met, and that the law and order situation is also intact on the ground. Akshata, back to you. All right, Tanushree, thank you for that ground report. Let me also break down where all of this tension is taking place. I'm going to explain to you where the farmers are at the moment, close to Delhi, where the designated spot also is from the Delhi police for them to protest. So all of this is happening in North Delhi. The Singhu border is between Haryana and Delhi. This is where a lot of the protesting farmers are. Now remember that their demand is clear. The reason they're not moving from this particular spot is because they want their protest, their demonstration to be held either at Jantar Mantar or Ramlila Maidan, both of which is in central Delhi. The police hasn't given permission for that. Instead, the police is telling all of them to move from here to Burari, which is another massive ground. That's the site that's been approved for the farmers' agitation by the Delhi police. You're seeing a few farmers here, but most of them are still at the Singhu border, saying that they want to move either to Jantar Mantar or to Ramlila Maidan and not protest at the Burari ground. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.